Yeah, I can see it now. Okay, right. Uh, 1 second. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So today we're gonna start with एक नया chapter, and obviously this is chapter number 16, inheritance का. इस चैप्टर में बेसिकली और मेजॉरिटी में भी हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में कि द हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्टफ, मायोसिस, माइटोसिस, टेस्ट क्रॉस, स्पनेट क्रॉस, लिंक जीन्स, अनलिंक जीन्स, ऑल ऑफ दैट स्टफ, ऑटोजोम्स, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं इसमें, लेकिन लेट्स फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस. एक ऑफस्प्रिंग के सेल में क्रोमोसोम्स आते कहाँ से? सो द क्वेश्चन जो मैंने वी हैव केप्ट इन फ्रंट ऑफ अस इज, वेयर डू द क्रोमोसोम्स और वेयर डज द क्रोमोसोम्स इन द सेल्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग कम फ्रॉम? सबसे बेसिक क्वेश्चन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया. इससे हम शुरू करेंगे कि अगर एक ऑफस्प्रिंग अभी अभी पैदा हुआ है, इट हैज बीन गिवन बर्थ टू, उनके सारे सेल्स में क्रोमोसोम्स आते कहाँ से? So let me just complete this. But even before that, let's go back to a previous question जो कि इससे भी पहले पूछा जाना चाहिए, और वो ये है कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कैसे किया जाता है. So could you tell me ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन कैसे होती है? What's the name of that biological process? It's one of the life organisms के stages में आता है ये. Reproduction? Reproduction. So you remember IGCSE biology में there was something called a mnemonic called Mrs. Green. Yeah. Uh, yeah, so movement, respiration, sensitivity, reproduction, metabolism, all of that, and excretion, ये सारे processes होते हैं which classify any organism as a living organism. तो अगर ये साथ के साथ processes वो कर सकते हैं तो वो एक living organism है. In the same case, one of these is reproduction. So in order to produce an offspring, the process of reproduction needs to take place. When we talk about reproduction, ये दो तरीके के होते हैं. In IGCSE, you might have looked at asexual reproduction, जो कि plants में होती है, correct? Yeah. Yes. And obviously, the other type is sexual reproduction. This chapter will deal with the second type of reproduction. So let me just quickly write both of these, and then we're gonna move on. तो हम इस तरीके की रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. अब ये शुरू ऐसे होता है कि फर्स्ट यू हैव अ मेल सेल इनसाइड द बॉडी ऑफ एनी मेल. इफ यू लुक एट एनी सेल, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डज अ सेल ऑफ अ मेल हैव? 23. 46 क्रोमोसोम्स. तो 23, आई नो कि इट्स अ नंबर जो कि बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, एंड 46 इज द करेक्ट नंबर. दिस इज बिकॉज द रीजन व्हाई 23 इज taught, वो इसीलिए बिकॉज they have 23 pairs of chromosomes. So it's not 23 chromosomes, but 23 pairs of these chromosomes. तो each chromosome तो एक singularity में count होगा ना. So in total you have 46 chromosomes. Now, could you tell me the number of chromosomes in a female cell? 46 again. 46 again. बिल्कुल सही. Now, हमारे cells में, sorry, हमारी bodies में different तरीके के cells होते हैं. There are some cells which are classified for some special functions. For example, ciliated cells. Another example is sperm cells. अलग-अलग तरीके के specialized cells भी होते हैं. There is also another type of cell called germ cells. अब दिस इज नॉट द जर्म्स जो कि बैक्टीरिया में होते हैं या जो शैम्पू और बॉडी वॉश की एड्स में होते हैं, नॉट दैट. जर्म सेल्स आर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स इन योर बॉडी. इन सेल्स का काम क्या है? These are the cells that take part in meiosis. Could you tell me what meiosis is? A brief explanation. If when you hear the word meiosis, what do you understand?
Like it's the process of like nuclear division. इट्स द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। कैन वी से कि ये ऐसा प्रोसेस है जिससे हम गैमेट्स बनाते हैं या गेमीट्स बनाते हैं? Yeah. Yes. So if you look at any single male cell in the body or any single female cell in the body, they are going to have 46 chromosomes, here 23 pairs of chromosomes. Germ cell is also like any other cell in the body. So germ cell की खासियत क्या है? It is the cell which is adapted to participate in meiosis. तो हमें हमेशा ये पढ़ाया जाता है कि meiosis होती है जिससे gametes बनते हैं, बट कभी ये नहीं पढ़ाया जाता कि gametes बनते किससे। So that's the germ cells which participate in meiosis, और वहां से we make the gametes. From a male germ cell, the gamete that we make is called a sperm cell. एक फीमेल बॉडी के अंदर germ cell जो gamete बनाता है, obviously it's called an egg cell. Now, could you tell me the number of chromosomes in a sperm cell? Over here it's gonna be half, so like 23 here. Correct. बिल्कुल, over here is going to be half. कभी भी gametes में if someone asks you कि कितने chromosomes होते हैं, it's always going to be half of the number of chromosomes जो किसी भी normal human cell में मिलते हैं, किसी भी normal bodily cell में मिलते हैं. So gametes always have half of the normal number of chromosomes. Normal number is 46. Half of that is 23. Egg cell में भी same चीज़ है, 23 chromosomes. And again, just to clarify, both of these are example of gametes. ये जो गैमीट्स होते हैं, दे टेक पार्ट इन अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये जो मैं पूरी चीज बता रहा हूँ, दिस इज हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, कि ऑब्वियसली फर्स्ट यू स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ मायोसिस, कि हमारी बॉडी में वी मेक ऑल ऑफ दीज गैमेट्स, एंड देन इट इज फॉलोड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेट मी जस्ट राइट दिस स्पेलिंग करेक्टली, फर्टिलाइजेशन। ओके, इस प्रोसेस में हम एक नया सेल बनाते हैं। इस सेल का नाम इज गिवन अ zygote. A spelling is very very important. Zygote. It's a zygote. Now look at this. 23 chromosomes and 23 chromosomes combining together to form this new cell. So how many chromosomes do you think this cell is going to have? 46. 46 chromosomes, जिसमें से 23 are from the mother and 23 are from the father. So this is the basics of reproduction. This is the basics of genetics. This is the basics of कैसे एक child is given birth to. Every single child, every single infant starts from a single cell. तो जस्ट एज अ समरी, सबसे पहले मायोसिस हुई जिससे गैमेट्स बने, फर्टिलाइजेशन हुई जिससे जाइगोट बना, और फिर उसके बाद माइटोसिस का प्रोसेस होगा. सो लेट मी राइट ऑल ऑफ दिस टुगेदर. फॉर प्रोड्यूसिंग एन ऑफस्प्रिंग, स्टेज नंबर 1 जो होता है, दैट इज मायोसिस. स्टेज नंबर 2, फर्टिलाइजेशन. एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज नंबर 3, यहाँ पे होता है माइटोसिस. Now, do you need to know the details, inner details के माइटोसिस यहाँ पे टेक्निकली किसको कहा जाता है? Yes, you do need to know. तो यहाँ पे होता ये है कि you start with a zygote, then ये एक zygote genetically divide होता है into identical cells, which is what mitosis is. You would have learned this in AS biology. आज हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू भी देख लेंगे, बट जनरली माइटोसिस का मतलब होता है गिविंग राइज टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव दिस सेल राइट हियर, लेट्स से इसमें ये दो लाइनें बनी हुई हैं. माइटोसिस जब होगा तो इट विल मेक टू सेल्स विद द सेम टू लाइंस. इन दो लाइनों से मैंने दिखाने की कोशिश की है द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. दिस, दिस एंड दिस इज ऑल ऑफ द सेम. माइटोसिस में it gives rise to two genetically identical cells as the parent cell. तो कहने का मकसद है, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट में है, एग्जैक्टली वो ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहले वाले सेल में है जो अभी अभी बना है, और दूसरे वाले सेल में. इट्स जस्ट दैट क्योंकि वो अभी अभी रिसेंटली बने हैं, देयर साइज इज रियली रियली स्मॉल कंपेयर टू द पेरेंट सेल. दिस इज द ओवरव्यू ऑफ माइटोसिस. तो वी स्टार्ट विद जाइगोट. एक सेल से हमने दो सेल बनाया, दो सेल से चार, चार से 16, 16 to 32. इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन.
So from a zygote, you make a ball of cells called an embryo. This is just IGCSE revision. This is why I'm going a bit fast. Embryo say we make an offspring. Now, if I ask you this, why is the offspring genetically different from the father and the mother? ये genetically different क्यों है उनसे? Because it like contains like half of both, so like it's a mixture of both mother and father. करेक्ट, बिल्कुल सही. द रीजन व्हाई इट्स अगर जो एक बच्चा पैदा होता है, इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम एज द मेल व्हिच इज द फादर, और नॉट एग्जैक्टली द सेम एज द फीमेल व्हिच इज द मदर. वो इसीलिए क्योंकि हर इंडिविजुअल पेरेंट से सिर्फ आधे आधे क्रोमोसोम्स हैं, व्हिच इज व्हाट यू सेड करेक्टली कि इट्स लाइक अ मिक्सचर. वो जो बच्चा बना है दैट हैज हाफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर and half from father. This is why the child or the offspring is always genetically different from the either of the two parents. So this is genetically different from both parents. Okay. अब let's first understand एक definition which is in your syllabus and उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. In your syllabus, you are required to be able to define the definition of a chromosome. In your exam, you will write that a chromosome is the genetic material which is in the nucleus made out of DNA and consisting of genes. We have always been hearing about chromosomes. यहाँ पे होते हैं chromosomes, यहाँ पे नहीं होते. 46 chromosomes, 23. But what actually is a chromosome? क्रोमोसोम इज द जेनेटिक मटेरियल. ये वो मटेरियल है जो कि सेल के अंदर न्यूक्लियस में पाया जाता है, और ये बनता भी एक ऑफस्प्रिंग के डीएनए से. And this is consisting, the chromosome itself is consisting of genes. Now, in your exam and whatever we're going to do right now, as in on paper, genes are represented in the form of lines. So, for example, अगर मैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम की एक एग्जांपल बनाता हूँ, आई एम ऑलवेज गोइंग टू ड्रॉ जस्ट अ सिंगल लाइन, और उस लाइन से आई एम गोइंग टू बी एबल टू रिप्रेजेंट एक जीन. अब ऑब्वियसली, like if you look at it in a real life situation, genes are not represented by lines. Could you tell me what genes are? कि genes actually में होते क्या हैं? This is also AS stuff. They're basically a sequence of like nucleotide bases on DNA. बिल्कुल सही. There are a sequence of nucleotide bases on a DNA molecule. So a DNA molecule has many nucleotide bases. For example, A, C, A, T, G, C. इतने लंबे sequences में से some sections of these sequences are represented as genes. तो for you could say कि एक DNA के molecule में बहुत बहुत सारे nucleotide bases होते हैं, and sections of these nucleotide bases make up genes. So technically you can also say कि DNA molecule gene से ही बनता है, और gene nucleotide based sequences से बनते हैं. लेकिन again, just to repeat, on paper examples करते वक्त exam में if you're asked to draw it, or for your reference, you will represent a gene using a single line on the chromosome. What is a chromosome? Genetic material in the nucleus which is made out of DNA, and it consists of obviously genes. Okay, right. Now अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं अबाउट रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में एवरी पेरेंट से, what I mean by that is male parent and female parent. From every single parent, one set of chromosomes must be passed down to the offspring. Now, let's first understand this using an example. Let's say, for instance, I have the male right here, and this is the female.
What I'm gonna do is मैं 4 chromosomes बनाने जा रहा हूँ for male and 4 chromosomes for female. So this is the first chromosome. I'm just gonna take this slow and steady. This is the second chromosome. This is the third, and this is the fourth. And female के लिए भी it is the exact same thing. Okay. Now, I'm just going to number all of these chromosomes so it becomes easier to represent them. One, two, three, four. Chromosome number 5, 6, 7, and 8. Now, I want you to look at this. Chromosome number 1 में मैं जो जीन है उसको यहाँ पे represent करने वाला हूँ, right here. And I'm going to do the same for chromosome number 2. Now, let's talk about what are these two genes exactly. Let's say both of these genes are the gene coding for fur length. So let's say if I'm talking about cats, for example, I have the male cat and I have the female cat. Male cat में let's say I pick out two chromosomes. हर chromosome के ऊपर एक gene है and these two genes represent the genes which code for the fur length. अब let's talk about these two chromosomes. मैं यहाँ पे भी genes बनाने वाला हूँ, again represented by the line. And यहाँ पे these are the genes coding for fur length. I'm going to do the same exact thing for a female. के मतलब chromosome number 5 पे and chromosome number 6 पे the top two chromosomes same as the male. मैं genes को same position पे बनाऊंगा and these are the same exact genes. This is also the gene coding for fur length and these two are the gene coding. In fact, I just mistakenly मैंने दोनों same चीजें लिख दी. 1 second. This is for color. And जो bottom वाले दो chromosomes है, this is for length. Okay. हर parent से एक set of chromosomes must be passed downwards. Now, when I say the word set, I do not mean के a pair. Now, for example here, which two chromosomes would you say are a pair of chromosomes? Obviously those chromosomes which look the same, right? So would you say that 1 and 4 are a pair or would you say that 1 and 2 are a pair? 1 and 2. 1 and 2. Now, what sentence did I say? Okay, every single parent say one set of chromosomes must be passed down to the offspring, which means that let's talk about a male here. It's not chromosome number 1 and 2 which is going to be passed downwards. It is one set of chromosomes. Every single set में एक ही तरीके का chromosome आएगा. So in a male, these are going to be the two sets. Chromosome number 1 and 3, chromosome number 2 and 4. Now, obviously, you can mix and match. You can say chromosome number 1 and 4. You can say chromosome number 2 and 3. But what's not going to be a set? 1 and 2 is not a set. 3 and 4 is not a set. This is a pair. सेट क्रोमोसोम्स के हम तब बोलते हैं जब अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. सो लेट्स से 1,3 और 1,4, 2,3 और 2,4. इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन बॉडी सेलेक्ट करेगी. लेट्स से इट चूजेस टू पास डाउन क्रोमोसोम नंबर 1 and 3 to the offspring. This is passed down to the offspring. 1 and 3. Now, फीमेल में भी सेम चीज होगी. Female parent में भी one set of chromosomes are passed down. Let's say it decides to pass down chromosome number 6 and 7. Right, तो यहाँ तक clear कि एक set of chromosomes pass down हो रहा है? Yeah. Okay. अब इस बात को समझते हैं कि किसी भी parent में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, why do you have two chromosomes representing the same gene? We look at this question. I just want to pose this question for now, लेकिन इसको आंसर हम बाद में करेंगे. So just keep thinking about this कि एक ही जीन दो क्रोमोसोम्स के अंदर क्यों है? Why can't you just have chromosome number 1 in a male? Why do you need to have chromosome number 1 and chromosome number 2 which are the exact same?
and they have the because they are the exact same, they have the same gene in the exact same position. तो हमें दो की जरूरत क्यों पड़ती है? We'll answer this later on. Okay. अब हमें मेल पेरेंट से एक सेट मिला, फीमेल पेरेंट से एक और सेट मिला. These two sets join together and this is what we call the process of fertilization. तो let's say this is our sperm cell and this is our egg cell. Fertilization का process हुआ. Now you have two sets of chromosomes, isn't it? Yeah. तो अब जब ये दोनों सेल्स ज्वाइन होंगे, we will produce something called a diploid. Diploid is the name given to cells that have two sets of chromosomes. So, if you're ever worried or you do not understand the definition of diploid and haploid, something which we have done in the earlier stages, IG में और थोड़ा बहुत भी AS में, always think about sets of chromosomes. Diploid में दो सेट होंगे chromosomes के, एक सेट मेल से आएगा और एक सेट फीमेल से आएगा. So diploid are cells that have two sets of chromosomes. डिप्लॉइड को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द सिंबल 2n, जहां पे 2 रिप्रेजेंट्स कि कितने नंबर ऑफ सेट्स हैं एंड n ऑब्वियसली रिप्रेजेंट्स द सेट. सो 2n का मतलब होता है टू सेट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैप्लॉइड. ये वाला सेल राइट है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 1 and 3 है, या ये वाला सेल राइट है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 6 and 7 है. Both of these are example of haploids because what is a haploid? Haploids are cells that have one set of chromosomes. And obviously अगर डिप्लॉइड का सिंबल 2n है तो हैप्लॉइड का सिंबल सिर्फ n होगा because you're dividing the number of sets, so you're dividing the symbol की definition भी. So 2n divide by 2, you're left with n. Now let's try one more example. But before that, let's answer the question which हमने पहले पोस्ट किया था, और वो क्या था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमें क्यों दो क्रोमोसोम्स की जरूरत होती है which are the exact same. Because एक क्रोमोसोम तो ऑफस्प्रिंग पे पास हो जाता है, सेम केस है, एक क्रोमोसोम तो ऑफस्प्रिंग पे पास हो जाता है. नाउ आई वांट यू टू इमेजिन दिस. मेल पेरेंट भी तो कभी ऑफस्प्रिंग होगा, उनके पेरेंट्स ने भी तो सेम चीज की होगी कि ये वाला क्रोमोसोम might have come from the male parent which is now for this the grandfather and from this the grandmother. सेम केस यहाँ पे, ये वाला क्रोमोसोम आया होगा ग्रैंडफादर से, ये वाला ग्रैंड मदर से. सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि हर बॉडी में दो जीन्स दो क्रोमोसोम्स की होते हैं which are the exact same. Yeah. ओके. क्योंकि एक पेरेंट से एक क्रोमोसोम, दूसरे पेरेंट से दूसरा क्रोमोसोम. ओके. अब हम एक और डेफिनेशन को समझते हैं. एंड व्हाट यू नाउ हैव टू डिफाइन इज समथिंग कॉल्ड होमोलोगस chromosomes. Homologous chromosomes is nothing new. It's a pair of chromosomes. तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कितने क्रोमोसोम्स की बात हो रही है इस वक्त, दो की बात हो रही है. इट्स अ पेयर. एक ऐसा पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जिनकी लेंथ सेम होती है, सेंट्रोमेयर की पोजीशन सेम होती है, और जीन की पोजीशन भी सेम होती है. So a pair of chromosomes which have, and you need to remember this definition, which have the same length, same position of centromere, and same gene position. अब इसको हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं. So what I'm going to do is I'm going to draw a homologous chromosome, मतलब pair of chromosome. यहाँ पे ये पहला और फिर ये दूसरा. Let's copy this ताकि बिल्कुल identical लगे. Now look at this. This is where the centromere is for this chromosome. Do these two chromosomes have the same position of the centromere?
Yeah. They do. Now, do these two chromosomes have the same length? Yeah. Okay. ओके, नाउ अब मैं क्या करूंगा, दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर, ईच क्रोमोसोम पे मैं एक जीन बनाऊंगा, मतलब मैं एक लाइन बनाऊंगा. सो दिस लाइन राइट हियर एंड दिस लाइन राइट हियर. Do both of these chromosomes have the same position which their gene is on? Or are they different? For example, कि पहला जीन यहाँ पे है और दूसरा जीन यहाँ पे. It's the same position, It's the right? same. Yeah. It's the same. Okay. So I now have something called homologous chromosomes. एक ऐसा पेयर जिसकी सेम लेंथ है, सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम है और जीन की पोजीशन सेम है. One new word which I would advise you to use. Position of a gene के लिए एक word use किया जाता है, and that is called loci. Loci or loci, loci. Whenever you talk about the position of a gene, you're talking about the loci. So loci की definition होती है gene position. Nothing more than that, nothing less than that. So when you define homologous chromosomes, instead of writing gene position, you can write same gene loci. Right. So any confusion until here? No, it's clear. Okay. Now let's move on to the next point. Every diploid cell in the body में 22 pairs होंगे homologous chromosomes के. Each diploid cell, मतलब 2n in the body, has 22 pairs of homologous chromosomes. मतलब 22 pairs ऐसे होंगे जिनमें for every single pair, if you zoom into any single pair, उनमें दो chromosomes होंगे जिनकी length same है, centromere position same है, gene loci same है. And 22 examples of these, so 22 pairs of homologous chromosomes. But you might ask कि किसी diploid में तो 46 chromosomes होते हैं, and 46 का मतलब तो 23 pairs होता है, so why have I written 22 pairs? वो इसीलिए because one pair of chromosomes, the last one, is X and Y chromosome. So if you look at all of the 46 chromosomes in the body, 44 are the normal ones, और फिर दो chromosomes ऐसे होते हैं, one of it is X and the other is Y. तो obviously ये pair same नहीं होते हैं X और Y, इसीलिए हम इनको homologous नहीं कह सकते हैं. So 23 minus 1, 22 pairs of homologous chromosomes किसी भी diploid cell में होते हैं. These chromosomes का एक नाम है, and they are called sex chromosomes. Do you need to remember their name? You could. कभी कभार AVP का इसमें point मिल जाता है कि what's the name of this pair of chromosomes in a diploid cell, and yeah, that's pretty much it. Okay, so let's summarize this for a second, and I'm just go upwards. The way you produce an offspring is that you have the male germ cell and the female germ cell. वहाँ पे meiosis का process होता है, which we're gonna look at later on, जिससे gametes बनते हैं. Gametes are an example of an haploid cell, जिसमें n number of chromosomes होते हैं and not 2n number of chromosomes. ये gametes फिर आपस में join करते हैं, combine करते हैं, a process called fertilization, with which we make a zygote that has 23 pairs of chromosomes. This is 2n, 23 from mother, 23 from father. अब the way we looked at कि किस तरीके से ये process होता है is that, for example, if a male में you have two sets of chromosomes, each set of chromosomes is passed downwards to the offspring. ये join होते हैं, fertilization, so on and so forth. Okay, now let's talk about the process of meiosis. Meiosis, as you said, when I first asked you what thought comes to meiosis when you hear that word first, it is a type of nuclear division. एक ऐसा process जहाँ पे nucleus divides into two, just like mitosis. Mitosis and meiosis दो तरीके के nuclear divisions होते हैं. And again, this is the process involving gamete formation.
Now, what I'm going to do is I'm going to paste a picture which is going to explain the overview of meiosis taking place. I'm just going to zoom in this picture right here. Okay. What happens even before meiosis? Okay, now do you remember the mitotic cell cycle, chapter 5 AS biology? Yeah, I G1 do. stage. Yeah. So do you remember what happened in the S stage? जो माइटोटिक सेल साइकिल का एस स्टेज था आफ्टर द G1 स्टेज एंड बिफोर द G2 स्टेज, उसमें क्या प्रोसेस होता था? The DNA replication? करेक्ट, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता था. This is exactly what takes place even before the process of meiosis starts. So I want you to ignore everything right here. Just focus on this part. DNA replication takes place, जहाँ पे every single chromosome replicate कर जाता है. So this chromosome right here, it replicates into this. This chromosome right here replicates into this. This right here into this, और ये चौथा वाला chromosome into this. If I zoom in into what's actually happening is for every single chromosome right here, हमारे पास एक sister chromatid था. So look at this. This is one chromosome and one sister chromatid. Look at this. This is still one chromosome, but it's two sister chromatids now. So earlier, one chromosome used to be equal to one sister chromatid. और डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद व्हेन एवरी सिंगल क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स इट जस्ट मेक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ. तो अब एक ही क्रोमोसोम में we now have two sister chromatids. Now this is going to be really really important when we talk about the process of meiosis. बहुत से बच्चे इस स्टेज को स्किप कर जाते हैं और एंड में आके उनको समझ ही नहीं आता कि कौन से वाले सिस्टर क्रोमैटिड के साथ कब और कहाँ और कैसे सेपरेशन हो रही है. सो यू नीड टू फर्स्ट इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस कि डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद मायोसिस 1 का प्रोसेस होता है. सो इफ यू लुक एट मायोसिस एज अ होल ओवरऑल में इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस, मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2. If I were to write down a headline कि meiosis 1 में जनरली होता क्या है, टेल मी इन 5 वर्ड्स और लेस, आई वुड से कि यहाँ पे होती है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. इस पूरे प्रोसेस में homologous chromosomes are the ones that are being separated from each other. Again, what are homologous chromosomes? Chromosomes, a pair of these that have the same gene loci, same centromere position, and same length. एक बार meiosis 1 खत्म हो जाता है, from one cell you now have two cells. Now starts the process of meiosis 2. Meiosis 2 में, if again I were to write a headline, this is the separation of sister chromatids. And after meiosis 2 ends, we get four cells. So now if you look at meiosis overall, एक cell से we go to four cells. And each of these cells are genetically the same. लेकिन if you compare them to the parent cell, all of these and this are genetically different to one another. So I want you to understand this. चारों cells एक दूसरे के comparison में तो same है, लेकिन parent के comparison में different है. So I'm gonna write down a question here. Describe why meiosis is referred to as reduction डिवीजन. मायोसिस को हम न्यूक्लियर डिवीजन तो कहते ही हैं, लेकिन इसका एक और नाम भी है रिडक्शन डिवीजन. ये क्यों कहते हैं? द रीजन व्हाई वी से दैट इज क्योंकि लुक एट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. पहले जहां पे लेट्स से 46 क्रोमोसोम्स थे, अब हर उसमें 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं. What you're doing is you are halving the number of chromosomes. You are reducing them by a factor of 2. इसलिए the word reduction. Point number one. You're halving the number of chromosomes. When you do that, could you tell me what's the type of cells that we form? Do we form diploid or do we form haploid? Haploid cells? Haploid cells. बिल्कुल सही. We form haploid cells. From the diploid cells, मतलब
two sets of chromosomes है, we now have one set of chromosomes. तो 3 points you would have to mention. ये एक 2 से 3 मार्क का सवाल आता है P4 में. So what are the points that you have to mention? सबसे पहले meiosis को reduction division इसलिए कहते हैं because it halves the number of chromosomes. Number two, to form haploid cells जिनमें एक सेट होता है क्रोमोसोम्स का, और ये किससे बनते हैं? फ्रॉम डिप्लॉइड, जिसमें ऑब्वियसली 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के. ओके, अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं अबाउट इन सेल्स के साथ, इन इन सेल्स के ऑब्वियसली अंदर क्रोमोसोम्स के साथ हो क्या रहा है. लेट्स टॉक अबाउट इट इन अ बिट मोर डिटेल. सो आई एम जस्ट गोना पोस्ट दिस पिक्चर राइट हियर. थोड़ा सा इससे आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है. सो obviously I'm not going to draw 46 chromosomes यहाँ पे, कोई फायदा नहीं है उसका. So let's just start with 6 chromosomes. The process जो होने वाला है वो तो सेम होने वाला है if I draw 46 or if I draw 6. So 6 chromosomes इस पिक्चर में you can see. This is a diploid cell क्योंकि 2n है. डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है. तो पहले जब एक क्रोमोसोम में एक सिस्टर क्रोमेटिड था, अब एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड होंगे. मायोसिस 1 होता है. होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं, एंड फ्रॉम देयर यू गेट 2 हैप्लॉइड सेल्स. नाउ meiosis 2 होता है, एंड साइटोकाइनेसिस होता है, which is obviously at the end of every न्यूक्लियर डिवीजन का स्टेज. जैसे माइटोसिस के एंड पे साइटोकाइनेसिस होता था, वैसे ही मायोसिस के एंड पे साइटोकाइनेसिस होगा. सो फ्रॉम वन सेल यू मेक 2 cells. फ्रॉम ईच ऑफ दीज 2 cells यू मेक 2 more cells. तो टोटल में हम 4 cells बनाते हैं स्टार्टिंग आउट फ्रॉम वन सेल. अब इसकी डिटेल में जाते हैं. Let's first talk about the DNA replication wala stage. The chromosome gets duplicated. So look at this diagram again. It's simply duplication of chromosomes. So chromosome gets duplicated. Now, would it be right if I say कि यहाँ पे 6 chromosomes थे और अब यहाँ पे 12 chromosomes है? क्या ये statement सही होगा या क्या ये statement गलत होगा? Could you repeat? So the statement which I'm gonna say, you're just gonna tell me if it's right or wrong. अगर पहले मैं ये कहूँ कि 6 क्रोमोसोम्स थे और बाद में 12 क्रोमोसोम्स हैं, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और इज दिस रॉन्ग? Um, Correct. दिस स्टेटमेंट एक्चुअली इज रॉन्ग. क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, विच इज अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इफ यू हैव वन क्रोमोसोम हियर, ये जो मैं चीज सर्कल कर रहा हूँ दिस इज वन क्रोमोसोम. ये जो मैं चीज सर्कल कर रहा हूँ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वन क्रोमोसोम. तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? पहले एक क्रोमोसोम के अंदर एक ही सिस्टर क्रोमैटिड था. यू सी देयर इज ओनली वन सॉर्ट ऑफ द शेप, बट नाउ यू हैव टू ऑफ these shapes, number 1 and number 2. Every single one of these represents a sister chromatid. तो पहले let me go back to this. एक क्रोमोसोम के अंदर एक सिस्टर क्रोमैटिड होता था. अब एक ही क्रोमोसोम के अंदर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. सो इजंट इट द नंबर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स दैट हैव डबल्ड, लेकिन क्रोमोसोम नंबर यू सी इज द सेम, राइट? Yeah. सो ऑलवेज यू कैन राइट क्रोमोसोम नंबर जो है वो तो हमारा सेम ही रहता है. व्हेन वी से कि क्रोमोसोम गेट्स डुप्लीकेटेड, वी मीन कि नाउ इन एवरी क्रोमोसोम there are 2 sister chromatids. That is it. ओके, मायोसिस 1 डीएनए रेप्लिकेशन के बाद यही वाला स्टेज होता है. सो मायोसिस 1 की हमने ओवरऑल ओवरव्यू क्या लिखा था? हेडलाइन सेपरेशन ऑफ homologous chromosomes, and we are going to look at how that exactly happens. सबसे I don't think we're going to cover the entire thing, but let's see how far we can get.
सबसे पहले तो प्रोसेस होता है प्रोफेज का। नाउ इफ यू जस्ट राइट प्रोफेज यहाँ पे एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मायोसिस वन, एग्जामिनर इसको गलत मार्क करेगा। व्हाई? क्योंकि इस स्टेज का नाम प्रोफेज नहीं है, इस स्टेज का नाम प्रोफेज वन है, बिकॉज दिस इज मायोसिस वन। जिस तरीके से मायोसिस टू जब शुरू होगा तो फिर हम कहेंगे प्रोफेज टू। मायोसिस वन में प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन। मायोसिस टू में प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टीलोफेज टू। तो इफ यू जस्ट राइट प्रोफेज, एग्जामिनर को समझ ही नहीं आएगा इफ यू टॉकिंग अबाउट प्रोफेज नंबर वन और नंबर टू। सो ऑलवेज इंक्लूड द नंबर अलोंग विद द स्टेज ऑफ द सेल साइकिल जो हो रहा है। अब प्रोफेज वन में एक्चुअली होता क्या है? Now, whatever you learned in mitotic cell cycle के प्रोफेज में उस वक्त क्या होता था, the exact same thing is going to happen here, plus 2 to 3 extra points, ये extra चीजें यहाँ पे होने वाली हैं। So प्रोफेज वन में everything you learned in mitotic cell cycle, all of that stuff, plus a few extra details. Now, if you have a book with you, just go back to mitotic cell cycle. Or if you just remember, could you tell me what used to happen prophase one में? Early prophase, late prophase include करके साथ में? Basically, the nuclear membrane and the nucleolus they disappear, Mm-hmm. and the sister chromatids they basically the supercoiling of the DNA forms sister chromatids, Mm-hmm. and the centrioles they move to opposite ends. Okay, that's Uh, it. That is in fact pretty much it. Yes, yeah. perfect, 100%. So ये तीन points you need to remember, which obviously you do, जो प्रोफेज वन में होते हैं। So सबसे पहले जो हमारा न्यूक्लियस का एनवेलप होता है, which is called the nuclear envelope, ये एंड द न्यूक्लियोलस जो हैं डिसअपेयर होते हैं। दैट्स पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जो सुपर कॉइलिंग होती है, ओके नाउ यू हैव टू नो यहाँ पे एंड यू हैव टू राइट डाउन कि कौन सी चीज की सुपर कॉइलिंग होती है। The thing which is going to get supercoiled is called chromatin. Supercoiling of chromatin. So think of the chromosomes as in two forms. Chromatin, ये वाली form होती है. I'm just gonna zoom in right here. You see, it looks like a ball of chromosomes which are just randomly joined together. They look like wires joined together. वो इसीलिए because ये वो form है chromosomes की which is not the most coiled in nature. ये सिर्फ रैंडमली जॉइंड है और रैंडमली अरेंज या कुछ से रैंडमली प्लेस्ड है। अगर हमें जगह बचानी है, इफ वी नीड टू सेव सम स्पेस, इफ वी नीड टू कंडेंस द शेप ऑफ एवरी सिंगल क्रोमेटिन, तो फिर हमें उसकी सुपर कॉइलिंग करनी पड़ेगी। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव वायर्ड ईयरफोन्स, you see how people start to wrap the wired earphones around their hand just so that उस earphones की size कम हो जाए, उसकी length कम हो जाए। Yeah. Exactly, this is what happens. You have chromatin right here. The chromatin wraps around itself ताकि अब जो वो स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम होगा सिस्टर क्रोमेटिड। तो पहले TIN, बाद में TIDS। So supercoiling of the chromatin makes sister क्रोमेटिड्स। ये हम क्यों करते हैं? ये हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ये ऑब्वियसली हम नहीं करते, नेचर करता है, ताकि क्रोमेटिड्स ज्यादा बेहतर बेहतर तरीके से दिख सकें, हम जगह के ऊपर सेव कर सकें, एंड द शेप जो है वो बेहतर बन सके, एज इन जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होके क्रोमेटिड्स बन जाए। नंबर थ्री, सेंट्रियोल्स मूव टूवर्ड्स opposite poles of the nucleus. अब व्हाट आर द एक्स्ट्रा चीजें जो यहाँ पे होती हैं which we don't know about right now? Point number four, and this is a new point. Homologous chromosomes pair up in a process called synapsis.
जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, वी जस्ट लर्नड कि किसी भी सेल में 22 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं. These homologous chromosomes pair up in a process called synapses. Now, be very sure of the spelling you're going to write for this word synapses, because this is very, very similar to the word synapses. If I had $1 for every single times I have read someone writing this word, I'd be a millionaire right now. इतने बच्चे गलतियां करते हैं कि I की जगह E लिख देते हैं. The entire word gets cut out by the examiner. The entire mark gets lost by the candidate. सिर्फ एक I की जगह E लिखना, because when you say synapses, फिर वो कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में चला जाता है, द साइनेप्टिक नॉब एंड द न्यूरोट्रांसमीटर, ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो ऑलवेज मेक श्योर ऑफ द स्पेलिंग, इट इज SYNAPSIS. ये वो प्रोसेस का नाम है जिससे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप कर जाते हैं. सो इफ आई गो बैक टू द डायग्राम राइट हियर, दिस डायग्राम, you see sort of these homologous chromosomes pairing up together. Yeah. Yeah, this process is called synapsis. जब सिनेप्सिस का प्रोसेस होता है, then there is something called a bivalent being formed, resulting in a bivalent being formed. अब ये bivalent क्या चीज है? Bivalent is the name जो कि दिया जाता है to the structure when you find the chromosomes sticking to each other. So for example, if I can just try to draw this is the first chromosome, and then this is the second chromosome. You see these two chromosomes sort of interlock with each other, or yeah, you could say interlock, or they try to join with each other. This they're sticking. Yeah. इस तरीके के स्ट्रक्चर को, and hence the entire thing is called a bivalent. तो यहाँ पे तो obviously we don't see that thing happening, लेकिन if I try to zoom in more and more, these parts join together with each other, or you could say stick together with each other. तो फिर इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम हम दे देते हैं bivalent. बाइवेलेंट कब फॉर्म होता है? सिनेप्सिस के प्रोसेस में, व्हेन दे पेयर अप टुगेदर, बिकॉज ऑब्वियसली वो स्टिक आपस में नहीं कर पाएंगे जब तक वो पेयर नहीं करेंगे. तो पहले पेयर करते हैं, फिर स्टिक करते हैं. सो बाइवेलेंट फॉर्म हो जाता है. अच्छा, प्रोफेज वन में एक आखिरी पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर में occur. What is crossing over? ये we learned this long ahead chapter के. This is a very big chapter, even bigger than chapter 15. ये हम आगे जाके पढ़ेंगे. For now, just remember कि crossing over एक random process का नाम है जो कि हो सकता है. Crossing over क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, कब होती है, we learn this later on. So just to summarize prophase 1, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर करता है, क्रोमेटिन सुपर कॉइल करता है ताकि उसका शेप कंडेंस हो जाए, एंड नाउ इट्स कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिन. सेंट्रियोल्स जो होते हैं, दे मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द न्यूक्लियस, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हमारे सेल के अंदर हैं, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर हैं, ये पेयर अप करते हैं इन अ प्रोसेस कॉल्ड सिनेप्सिस. और इस प्रोसेस में वी गेट समथिंग कॉल्ड अ बाइवेलेंट बीइंग फॉर्म्ड. क्रॉसिंग ओवर, it's some unknown process for now, which also may occur. Again, you see, I use the word may. शायद हो सकता है, शायद ना भी हो. This is why I've used this word. So we'll stop right here because the next stage is metaphase one, which is a very important phase. I don't want to start it today because we would have to complete the entire meiosis thing. So is everything clear until here? कोई भी confusion हो until here? No, it's clear. ओके, सो आई नो कि आज आई माइट हैव सीम कि मैं अपने सेंटेंसेस को कट डाउन कर रहा हूँ, कि आई एम सेइंग समथिंग एंड देन आई स्टार्ट सेइंग समथिंग एल्स, आई एम ब्रेकिंग अपार्ट. वो कभी कभार इट हैपेंस टू मी कि इट्स एवरीथिंग जस्ट सॉर्ट ऑफ गेट्स मिक्स अप इन माय माइंड व्हेन आई एम थिंकिंग ऑफ टू मेनी थिंग्स. सो इफ यू एक्सपीरियंस दैट, माय बैड फॉर टुडे. No, it was fine. Yeah. ऑलराइट, ओके, परफेक्ट. सो if you have no confusions, then that would be pretty much it for today. Yeah, that's fine. Okay, yeah, could you give me a summary of what we looked at?
Okay, so basically we discussed about diploid and haploid cells. That diploid cells basically contain two sets of chromosomes, and like haploid cells they contain a single set of chromosomes, and like in diploid cells there's one maternal set and one paternal set, and like examples of haploid cells they include the gametes and so um, and then we discussed about genes that they are basically sequence of nucleotide bases on DNA, and then we basically talked about meiosis, which is basically a process of nuclear division after which gametes are produced, and we discussed about prophase, and that in prophase the nuclear membrane of the nucleolus disappears and the sister chromatids form, the centrioles move to opposite ends, and bivalents also form, and crossing over may occur. Right. Perfect. So everything was all good. So we'll keep it till here and then इसको हम अगली क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं. Okay, for the class we missed, which I rescheduled, do you want to have it tomorrow or Saturday? Are you free like on Saturday, like 9 p.m., or is it 9 hard? p.m. Let me just check. Give me 1 second. Abhi we'll just confirm the time. 1 second. Uh, So मेरी क्लास है जो कि एंड होती है at 9 p.m. Okay, yeah, I'm free at 9 p.m. so we can have it from 9 to 10. Yeah. Okay, then I think that's All right. fine. Yeah. Say. Okay. Right. Thank you. Allah Hafiz. Thank you, Rafiz.